आपको पता है क्या, आपने कभी सुना है किसी इंसान ने सेल्फलेसली अपने पूरे लाइफ को किसी को सबमिट कर दिया हो, या सेल्फलेसली किसी के लिए काम करता हो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता था कि सेल्फलेसली किसी के लिए काम करना विदाउट एनी मोटिव बहुत बहुत मुश्किल होता है। बट one of the events which happened after Sia's birth actually changed my life, especially seeing in this perspective. So I really want to talk about and share this story with you guys so that you also get that strength and you also understand what it takes to be selfless devotee of somebody. So आपने पास 2 सालों में ना बहुत बार ये सुना, कोरोना के स्टोरी सुने होंगे, कुछ अच्छे सुने होंगे, कुछ बुरे सुने होंगे, जिसमें बहुत सारे ड्रास्टिक डेथ्स हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग सीरियस हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत सीरियस हुए लेकिन देन दे केम बैक टू नॉर्मल एंड दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। सो ये सारा डेटा ना हम लोग के माइंड में पिछले 2 साल से ऑलरेडी फीड हो रखा है ड्यू टू न्यूज़, ड्यू टू इवेंट्स विच यू सी इन योर लाइफ ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऐसा ही कुछ इवेंट मेरे साथ भी हुआ। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट दिस इवेंट वुड हैपन व्हेन आई वाज नॉट देयर विद सिया, और when Sindhu and Sia were away for me for quite a while of time. So yes, good morning guys, welcome back to You, Me and We, and I'm going to share a story today which is very important and very close, because it has taught me a lot of things. And yes, let's begin and let's share this story. So this story is, did my 3 months old daughter get COVID रिसेंटली? तो ये क्वेश्चन या ये इस वजह से आया, ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है दैट सिंधु एंड माई डॉटर आर स्टेइंग विद सिंधुज पेरेंट्स फ्रॉम अ वाइल नाउ, बिकॉज मैंने पहले के वीडियोस में भी बता रखा, आप सारे वीडियोस चेक करोगे तो देखोगे एट द इनिशियल लेवल यू नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल. That's why she was staying with her family and Sia was also there, and their parents are looking after them. सडनली क्या हुआ, आपको पता ही है, कोविड का टाइम चल रहा है, एंड थिंग्स आर हे वायर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सडनली क्या हुआ, वन फाइन डे सिंधुज डैड started feeling some cough and cold issues suddenly. So he realized that it might be a flu or COVID also, so he immediately isolated himself. Now after few days what happened is कि सिंधु के पापा के साथ सिंधु की मम्मी, सिंधु का भाई, सिंधु एवरीबडी गॉट टेस्टेड सडनली पॉजिटिव. अब यहाँ पर मेरी टेंशन ये थी कि हाउ विल सिंधु मैनेज दिस कोविड थिंग एंड देन अगेन मैनेज सिया एट द सेम टाइम. सो एंड मैं जब भी उससे फ़ोन पे बात करता था, मुझे आज भी याद है, शी यूज़ टू फील सो लो, शी यूज़ टू फील सो टायर्ड, सो स्ट्रेन, बिकॉज फुल बॉडी एक्स होते थे, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑन टॉप ऑफ दैट फीवर. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो शी वॉज सेइंग कि सिया को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये. सो we consulted the doctor. The doctor said that you wear a mask and you sanitize your hands before touching the baby whenever possible, and just continue to feed the baby because without feeding it will not do. So obviously Sia मेरे पास नहीं आ सकती थी क्योंकि she needs feeding and her mom has to continue feeding for her even if it is COVID. So we were like fine, we will try to manage things. लेकिन सिंधु was totally trained and मैं जब भी उसको फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश करता था, she always used to feel so tired and बहुत ज़्यादा वीक. आवाज़ से पता लग जाता था मुझे बहुत ज़्यादा वीक है वो. एंड मुझे पता था कि वो it's a very difficult time for her to manage herself at the same time manage Sia also, because Sia needs all the attention at this point of time. मैंने पहले एक बार को सोचा कि मैं सिया को एटलीस्ट अपने पास ले आऊँ, बट अगेन देन सिंस हर मॉम हैज़ टू बी देयर विथ हर, आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन. धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई एंड थिंग्स वर गेटिंग स्टेबलाइज. देन व्हाट सडनली हैपेंड वाज
Sindhu was on the path of recovery, though she was not fully recovered, but she was on the path of recovery, and rest everybody else in the family were on the path of recovery. Luckily nobody was serious, and everybody was all right, and have isolated themselves in the home only, and they were on the path of recovery. Luckily one fine unfortunately, not sorry, and it's not luckily, unfortunately, what happened was one fine day, at least 5 to 6 days later, after Sindhu tested positive, though she followed all the COVID norms. She wore a mask, she always sanitized her hands before touching Sia or before taking Sia in hands, but still 4-5 दिन के बाद Sia suddenly had fever. और वो टाइम था गाइज व्हेन आई वॉज कम्प्लीटली क्रेजी. मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई वॉज लाइक शी इज़ 3 months ओल्ड, आई मीन वी कांट इवन डू एनी थिंग. यहाँ पर मतलब हैवी डोसेजेस वैक्सीन्स ये सब इतने छोटे बच्चे को नहीं दे सकते हैं हम लोग, क्या करें. सो we finally called the doctor. We have pediatrics who is seeing Sia from day 1, from day 0 in fact, since the time she's born in Cloud9. मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे बात की, and he said that if the fever is too much, you should take her to normal the local clinics, or if not, then we'll see, or we'll prescribe any paracetamol. Now what I want to clear here is that if in case आपके घर में ऐसा कोई situation होता है, touch wood, आपके बेबी के साथ ऐसा कोई situation होता है, do not give paracetamol just like that. You have to consult your pediatrics. जो paracetamol की dosage होती हैं, they actually depend on the weight of the baby. तो बेबी के वेट के हिसाब से उनको पैरासीटामॉल के डोसेज देते हैं, जस्ट इन केस द फीवर इज़ नॉट कमिंग डाउन. बट हमारे केस में तो वो भी नहीं हो सकता था लोकल हॉस्पिटल में ले जाना, क्योंकि सबको कोविड हो रखा था, एंड नोबडी वाज एबल टू एक्चुअली वॉक आउट ऑफ द हाउस आल्सो. सो वो भी नहीं हो रहा था. देन fortunately Sindhu's cousin sister is also a doctor, and she came as a savior, and she actually helped a lot. She helped in the medication, saying that paracetamol का जो dosage होता है सिया के weight के हिसाब से देने को बोला, and then every 4 hours monitor करना पड़ता था whether the temperature is decreasing or the temperature is increasing. And you know what, इस जैसे ही हम लोग को ये पता चला सिया को fever आया है, you won't believe when I used to talk to Sindhu at that point of time, एकदम से उसके जो सारे वर्ड्स थे वो चेंज हो गए थे, एंड शी वॉज लाइक आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, माई बेबी इज़ मोर देन एनीथिंग फॉर मी, एंड आई डोंट केयर वेदर आई हैव कोविड और नॉट. इफ इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड, आई विल गो आउट विथ माई बेबी एंड आई टेक हर टू हॉस्पिटल. इफ इन केस शी रिक्वायर्स माई अटेंशन, आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, एंड आई विल मेक श्योर दैट शी गेट्स ऑल द अटेंशन विच इज़ रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. सो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि कैसे एक इंसान इतना सेल्फलेस हो सकता है अपनी बेबी के लिए, whom actually she has met, technically she has met only 3 months back, बट एक कनेक्शन, एक बॉन्ड जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू इवन थिंक अबाउट योर सेल्फ. यू नो दैट यू आर totally weak, you can't get up from your bed, you have full body pains, you have fever, but still in that position you are sitting and talking to me and saying that, you know what, I am absolutely fine, there is nothing wrong with me, and trust me, nothing will happen to Sia, and I am there for Sia, and Sia will be all right. That kind of confidence जब सिंधु ने मुझे दिया ना, I was shocked, because अब सोचो आप खुद एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपका ही नहीं पता है कि आपको कब फीवर आ जाएगा, और उस सिचुएशन में आप इतना कॉन्फिडेंटली होके बोल रहे हो कि यू नो व्हाट, आई विल मेक श्योर दैट नथिंग हैपेंस टू सिया, एंड आई विल मेक श्योर दैट हर टेम्परेचर कम्स डाउन. सो कमिंग बैक, हम सियास सिंधुस कज़न एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट इन मेडिकेशन. उन्होंने पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब किया बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द डोसेज वाज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिया, and we started giving paracetamols. अच्छा, हम लोग को एक और चीज़ पता चली that Sia was having body pains also. तो ये हमें कैसे पता चला, जब सिंधु सिया को उठाती है, then there is a way you carry a baby. Every baby will be comfortable in one particular way only.
but whenever she was trying to touch Sia, she started crying, and that's a way of telling that you know what, mama, please don't touch me like that, or please don't carry me like that because I'm having baby pains. ये जो language है ना, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है. A normal person can't understand this kind of language. You can only understand this language which the baby is trying to communicate only when you are actually connected to that baby, you actually bond with that baby. So then slowly हमें सिंधु को ये समझ में आया कि she is having body pains also. तो धीरे धीरे हम लोग उसको स्पॉन्ज बाथ देने लगे. Sponge bath is also very helpful in decreasing the fever or temperature also. जो मतलब हमने किया था. अगर आपको लगता है कि आपके बेबी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, देन पानी को गर्म करिए, उसको रूम टेम्परेचर पे लाइए. रूम टेम्परेचर में वो उस पानी में स्पॉन्ज को डुबो के बेबी के पूरे बॉडी को वाइप करिए, and eventually the temperature comes down. This works. This has worked with Sia and we have tried it out. So all these things happen, and मेरी तो जान अटकी रहती थी यहाँ पर. मैं 24 घंटे सिंधु के साथ कॉल पे रहता था. Sometimes she used to pick, sometimes she doesn't used to pick, because obviously वो अपने आप को देख रही है, सिया को देख रही है, and then it's very very difficult to take up calls also at that point of time. So वो भी नहीं हो रहा था. तो फाइनली क्या हुआ कि करीब एक हफ्ते के बाद क्या हुआ कि सिया का जो टेम्परेचर है वो फाइनली कम हुआ, उसके बॉडी पेन्स कम हुए हैं, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग अनकम्फर्टेबल व्हेन हर मॉम वाज ट्राइंग टू कैरी हर ऑल दीज थिंग्स. बट द पॉइंट आई वांट टू एक्चुअली टेल यू बाय द स्टोरी इज दैट अ मॉम्स लव इज़ वेरी सेल्फलेस गाइज. समझना बहुत मुश्किल है, इसको समझाना भी बहुत मुश्किल है. आई हैव सीन दैट पर्सनली एंड आई हैव विटनेस दैट पर्सनली, एंड दैट्स व्हाई आई कुड रिलेट टू इट. Hats off to Sindhu for being so strong and being so confident that you know what, nothing is wrong with me and I will take care of Sia no matter what happens. It's very very difficult to manage a baby at that point of time, especially when you yourself are not in a position to even stand. And really I thanks Sindhu so much for that, because frankly telling मेरा कोई contribution नहीं था इसमें. I was not there for her to take care of the baby, because she was there and I'm here, and I couldn't go also because everybody in the house was positive, and I even if I would have gone, I wouldn't have been allowed there. So Sindhu all alone took everything, and she made sure that Sia becomes normal, and thankfully Sia is absolutely normal, and she's again smiling, and I love seeing her smile actually. So yes, this was the story guys. बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, but something which I wanted to wanted to tell you guys, because this is where I actually understood the meaning of being selfless about somebody or something. Also hats off to all the ladies who are pregnant right now, or the mothers who are taking care of their children at this point of time, especially during COVID, because I know मैं जब अपने घर में खुद देखता हूँ, it's very 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 difficult. It's more than doing a IT job or sitting in front of laptop from 9 to 5. उससे बहुत ज़्यादा है ये काम, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग्स. सो हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉम्स. And yes, this was the story which I wanted to share. I hope you liked it. प्लीज़ अगर ऐसे सिचुएशन में आप आते हैं तो प्लीज़ मतलब सबसे पहले टेंस मत होइएगा. आई नो टेंस हो जाता है इंसान बोलने के बाद भी, बट ट्राई नॉट टू गेट टेंस्ड, एंड ट्राई टू गेट इन टच विद द पीडियाट्रिक्स और द डॉक्टर यू शो योर बेबी टू. दे विल गाइड यू, दे विल मेक श्योर दैट योर बेबी इज़ सेफ एंड फाइन. And and hopefully we all will be out of this situation very soon. And yes, that's about it guys. I'll close the video now, and I'll see you tomorrow. Bye.